Look for it. These are properties of proportion. Priyanka, please stop talking now. They are very, very important, very useful properties. सबके Russian names हैं. First property is invertendo. What's the name of the property? Invertendo. Invertendo is if A upon B equal to C upon D, then it implies that B upon A will be equal to D upon C. That is in invertendo. We just have to do the reciprocal of both the things. So that is invertendo. Next is alternando. What is alternando? If A upon B equal to C upon D, then this implies these two will interchange their places. That is, this implies A upon C equal to B upon D. Basically, अगर आप इन दोनों की भी place change करते हो, then also it is alternando, right? So interchanging the positions of these two or these two is alternando. So A upon B equal to C upon D, then A upon C will be equal to B upon D. Next is componendo. Componendo is if A upon B equal to C upon D, then A plus B upon B equal to C plus D upon D. That is, if these two are equal, then their sum upon denominator, their sum upon denominator will be equal. Next is dividendo. Any guess? No. A minus B upon B equal to C minus D upon D. Although these two properties will be hardly used in any question. That is a property which will be used in 99.9% questions is the last one. We call it componendo and dividendo together. So it is componendo and dividendo. Componendo dividendo is if A upon B equal to C upon D. It implies A plus B upon A minus B, C plus D upon C minus D. That is numerators में दोनों को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर्स में दोनों को किन दोनों को एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट किन दोनों को एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. इसी में आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी अलग से भी नोट करो. Look carefully. If A upon B equal to C upon D equal to E upon F, if the numbers are like this, then this is equal to, then this implies that A upon B equal to C upon D equal to E upon F is equal to A plus C plus E upon B plus D plus F. This is each ratio is the same as the ratio of the sums of antecedent and consequent. So these are the basic properties of proportion which will be used, we'll be using in the BuzzFeed problem. This is the last concept of this chapter. Excuse me, sir. Look for the fourth question. 5x plus 6y upon 5u plus 6b is equal to 5x minus 6y upon 5u minus 6b. This is given to us. And we need to prove that x is to y is equal to u is to v. Now, please pay attention and try to understand the difference. ये difference समझना बहुत जरूरी है, otherwise there will be a lot of confusion. So stop doing any other thing and just be attentive. What is the difference between the first three questions or all the questions that we have done till now and this particular question? उन सारे questions में हमें ये given होता था और हम ये prove करते थे. Are you getting my point? अगर हमें ये given होता है, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते. X upon y equal to u upon v अगर given होता तो we would have written x upon y equal to u upon v equal to k, x equal to y k, u equal to v k और फिर यहाँ पर values put up करके उसको prove कर रहे थे. But यहाँ पर हमें ये given है. We have been given this and we need to prove this. Right? So these two are not same. Is the difference clear? कोई doubt किसी को?
ये क्वेश्चन करना आए या नहीं आए समृद्धि, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए. In the previous questions, this was given to us and we were required to prove this. अब यहाँ पर ये हमें given है और हमें ये prove करना है, right? So it is for these type of questions that we use the properties of proportion, right? We require the properties of proportion for these type of questions. Now look for the proof. 5x plus 6y upon 5u plus 6v is equal to 5x minus 6y upon 5u minus 6v. This is already given to us. The similar terms should be together on one side. जैसे यहाँ पर ऊपर x और y है, तो x और y terms यहाँ होनी चाहिए. So this means we need to rearrange these two. The rearrangement of these two is the property alternando. Very good, Lakshya. 5x plus 6y upon 5x minus 6y is equal to 5u plus 6v upon 5u minus 6v. And you need to mention the property that you are using. अक्षर अगर property mention नहीं की तो चिड़िया उड़ जाएगी. So you have to be careful. जो marks रूपी चिड़िया है वो उड़ जाएगी. So I hope this much is clear. If they are same, the best property to be used is बोलो फिर से समझा दूं. Okay. देखो प्रियंका यहाँ पर 5x plus 6y है, वेरिएबल्स ऊपर x और y हैं और नीचे u और v. x और y सारे एक साइड होने चाहिए. So we need to bring this to this side. तो अगर हमें कभी भी इन दोनों को इंटरचेंज करना हो, then we use the property alternando, right? अगर टर्म्स सेम हो but sign different हो, the property that we use is componendo dividendo. So now we'll write using componendo and dividendo. There are two things that we need to understand properly about this particular property componendo and dividendo. First thing that जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में वो दोनों के दोनों ऐड होंगे, डिनोमिनेटर में वही दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट. They are to be added in the numerator and to be subtracted in the denominator. What here they stands for? Numerator and denominator. Here they stands for numerator and denominator. And one very important thing, जो लोग blunder करते हैं इस type के questions में, componendo and dividendo cannot be used only on one side. It should always be used on both the sides. आप सिर्फ एक side में property use नहीं कर सकते. It has to be used on both the sides. So this will be, look carefully, 5x plus 6y plus 5x minus 6y. और नीचे दोनों subtract होंगे. 5x plus 6y अब subtract होंगे तो minus 5x plus 6y. Have you followed this? Let's see how much we have followed. Tell me what should I write here? Upon how many of you have not? किसको नहीं समझ आया? Okay, no problem. एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. As I said, componendo and dividendo जब प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, न्यूमरेटर में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में इन दोनों को ही सबट्रैक्ट करते हैं. तो जहां से डिनोमिनेटर बिगिन हो वहां से साइन चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे. -5x plus 6y. The same thing for RHS. देखो 5u plus 6v plus 5u minus 6v और अपॉन में 5u minus 6v. जहां से डिनोमिनेटर स्टार्ट हुआ है वहां से साइन चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे. ये बात याद रहेगी आपको. जहां से डिनोमिनेटर स्टार्ट होगा डिनोमिनेटर में वहां साइन चेंज होगा, राइट? न्यूमरेटर में दोनों ऐड होंगे, डिनोमिनेटर में दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे. आप इसका बेनिफिट देखो, हाउ यूजफुल दिस प्रॉपर्टी इज. 6y 6y 5x 5x 6v 6v 5u 5u 5x plus 5x upon 12y 10u upon 12y 12 and 12 10 and 10 x is to y is equal to u is to v. जो मैं प्रूव कर. Followed? It is just seemingly difficult. Seemingly difficult मतलब लगता है कि difficult है नहीं. Ratio proportion difficult. Particularly this topic. Please start, and if any step is not clear, please ask it right now. Excuse me, sir. Concept easy. Question number 7.
We have been given that the product of these two is equal to the product of these two. We have to show that A is to B is equal to C is to D. So first of all, we'll write it in the form of a ratio. This is A plus B plus C plus D upon, इन दोनों में से कोई भी एक आप इधर ले आओ. Which one? First वाला. A plus B minus C minus D. So obviously जो numerator में वो तो वही रहेगा. Whole upon this will be taken to this side. Why do we need to write it in this form? So that we can make the use of properties of proportion. So properties of proportion can only be used if they are written in the form of proportion. If A upon B. इसीलिए अगर आप recall करो सारी properties जो हमने लिखी है वहां पर मैंने सब जगह लिखा है if A upon B equal to C upon D then. तो if वाली situation में convert करने के लिए we are writing it in this. Am I clear with it? Now using componendo and dividend. तो एक बार न्यूमरेटर में दोनों ऐड होंगे a plus b plus c plus d plus a plus b minus c minus d और डिनोमिनेटर में दोनों सबट्रैक्ट a plus b plus c plus d minus a minus b plus c plus d. आपको ये बात अगर समझ आ गई कहां से साइन चेंज करने तो भाव से तक ये गड़बड़ मत करो. अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई कहां से साइन चेंज करने तो थिंग्स विल बी वेरी इजी. मैं फिर से बता देता हूं जहां से डिनोमिनेटर स्टार्ट होगा डिनोमिनेटर में डी डी डिनोमिनेटर स्टार्ट्स फ्रॉम डिनोमिनेटर वहां से साइन चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगा. राइट दीदी जहां भी दीदी आएंगे साइन चेंज हो जाएगा. देखो एक तो डिनोमिनेटर वाला डी और एक ये वाले डिनोमिनेटर वाला डी तो दीदी साइन चेंज ये बड़ा अच्छा बन गया है ना. सो दीदी साइन चेंज बस. So a minus b plus c minus d plus a minus b minus c plus d upon a minus b minus c plus d. Is it clear? एक मिनट. A minus b plus c minus d minus a plus b plus c minus d. अब क्लियर हुआ? प्लीज सच बोल दो अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो फिर से लिखेंगे a minus b plus c minus d and then the denominator plus a minus b minus c plus d. जो साइन है वो सेम क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों ऐड हो रहे हैं. डिनोमिनेटर में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे ना. तो न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करें तो दिस एज इट इज और अब सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज. So this plus a will become minus a, minus b will become plus b, minus c will become plus c and minus a. अब clear हो गया. So minus d plus d, minus c plus c, plus a minus a plus b minus b, plus c minus d plus d, plus a minus b plus b. So this is 2a plus a, 2a plus 2b upon 2c plus 2d equal to 2a minus 2b upon 2c minus 2d. 2 throughout common आकर cancel होगा पहले. a plus b c plus d, a minus b c minus d. Now alternate those. a plus b upon a minus b, c plus d upon c minus d. Reason by alternando. And now we'll use componendo and dividend. So a plus b plus a minus b, a plus b c plus d plus c minus d upon b and b, a and a, d and d, c and c. So we'll be left with 2a upon 2b equal to 2c upon 2d. So this is a to b is equal to c. I hope this is clear. Crystal clear? Question number 12. It was given x equals this and we are required to prove this. So this is given and we need to prove this.
So this x has been written as x upon 1. अब दोनों sides ratio की form में आ गई, so we can make the use of componendo dividendo. But why are we using componendo dividendo? See, componendo dividendo is actually a mathematical tool to simplify the calculations. ऐसे अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, we will not be able to put it on this form. बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. लेकिन अगर हम componendo dividendo यूज करते हैं, c x plus 1 upon x minus 1 equal to, look very carefully, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ कंफ्यूजन के चांसेस हैं, ध्यान से देखना. यहाँ पर हमने ऐड किया, अभी नहीं किया, अभी तो सिर्फ न्यूमरेटर लिखा है. देन plus a plus 3b and minus a minus 3b. Is it clear? Yes, sir. We add these two in the numerator. So, पहले numerator plus, then the denominator. And whole upon numerator. Numerator is a plus 3b plus a minus 3b. और यहाँ से denominator subtract होना start होगा. So minus a plus 3b and plus a minus 3b. Is it clear? Yes, sir. Slightest भी अगर doubt है, please अभी पूछ लो. It will be very easy for me to simplify. Clear है सबको? Yes, sir. This one and this one cancelled. This one and this one cancelled. यहाँ तो कुछ cancel हो नहीं सकता. So x plus 1 upon x minus 1. Twice of a plus 3b. Twice of a minus 3b. 2 and 2 cancelled. Now, in order to get rid of this square root sign, Pranjal, क्या कर सकते हैं? Squaring both the sides. If we square both sides, what will we get in LHS? X. अच्छा डायरेक्टली करना है. X square plus 1 plus 2x and x square plus 1 minus 2x. This is just अब अगर आप एनालाइज करो, फिर से वही सिमिलर टर्म्स आ रही है, तो एक बार फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. नो वन एल्स विल स्पीक. माइका आप बताओ बेटे, आप यूज करो यहाँ पर लेफ्ट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. होल अपॉन, मुझे बताओ क्या लिखूं. अब समझा, अब क्लियर हो गया सबको. Now this is equal to a plus 3b plus a minus 3b, a plus 3b minus 3b, a and a. 2x, 2x, x square 1, x square 1. So we are left with twice of x square plus 1 whole upon 4x is equal to 2a upon 6. 2 and 2 cancel. 2 2s are 2 3s are, and now cross multiply this. So this will be 3b into x square plus 1 is equal to 2x into a. So this will be 3b x square minus 2ax plus 3b is equal to 0. जब मैं प्रूव कर followed. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं. I hope this one is clear to all of you. Try doing it without looking at the board. Excuse me, sir. Yes, Anushka. So can you explain the last part?